Good morning, students. So today we'll start a new chapter, the second chapter, that is software concept. Now, before going for the software concept, let me to explain you what is software. What is software? Okay. So first thing we need to understand about a command or instruction. Command or instruction. Now, a command is a unit order given to the computer according to which the computer can perform a single task. इसका मतलब क्या हुआ कि एक कमांड और एक ऑर्डर जो हम कंप्यूटर को दे रहे हैं and according to which it will perform a single task, that is known as a command or instruction. Now a collection of commands is known as a program. A collection of instruction is known as a program. That means a set of instruction is known as a program. Set of instruction or set of command is used to solve a problem. It is used to solve a problem. For example, suppose we want to find the area of a right angle triangle. All of you know that is nothing than half into height into base. Half into height into base. But for doing that, first we have to take the input for height, input for base, and then we have to calculate area is equal to half into height into base. Then we have to display the area as output, so we have to write down some output for area. Now, in this case, this is instruction 1, instruction 2, instruction 3, instruction 4. Collection of these 4 instructions is known as a program, and using this program we can solve a problem to solve the area of a right angle triangle. Now, this program is stored in the memory, so that each and every time you need to find the area of a triangle, just you have to enter the height and base. According to the height and base, the area will be calculated. Okay. Now, next is a software. The software is a collection of program. More than one program, एक से ज़्यादा program की collection से बनता है एक software. Now, the software is used to solve a specific kind of application or a specific kind of problems. Now, collection of this program is known as a software. For example, this is program 1, whatever I have written over here, this is suppose program 1, and this program 1 is used to solve the area of a triangle. Likewise, we have program 2 that solve the area of a rectangle, program 3 circle, square, rhombus, parallelogram. All these programs are together known as a software. Now, using that software, it's a kind of mathematical software. Using this software, we can solve any kind of problem or any kind of area we can solve using this particular program. Okay, now come to the main topic, that is the software. Now, in a computer we have different kind of softwares, but whatever be the softwares are broadly classified into 3 categories. One is the system software, another is the utilities, and third one is the application software. Now, in this diagram, it explains the broad category of the software. The first one is the system software, second is the utility software, third one is the application software. Again, the system software is classified as operating system, language, processor. And the language processor are of 3 types: compiler,
assembler and interpreter. Whereas the application software are of two types. One is general purpose application software, another is a customized application software. So first go for the system software. As the name says system, and here the name says application, that is can be used to differentiate between these two kind of software. The system software are closer to the system, that means it's closer to the computer, that means it can directly interact to the computer. कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली जो इंटरेक्ट कर सकता है, that kind of software is known as a system software. Whereas the application softwares are those softwares which are used to solve a specific application, or it is used to solve a specific kind of task by the user. That means the user directly use the application software, the application software use the system software, and the system software use the hardware of the computer. The system software directly use the hardware of the computer, so that the each and everything whatever you want to calculate, store, process, or anything, each and everything has been done at the hardware. These hardwares are accessed by system software. System software is accessed by application software. Now application software is used by your user. Okay, now for example, आप लोग सारे रेस्टोरेंट जाते हो खाने के लिए. ओके, जब आप रेस्टोरेंट जाते हो तो एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है वहां पे. फर्स्ट यू हैव द मेनू कार्ड फ्रॉम व्हिच यू हैव टू ऑर्डर सम फूड, और देन यू आर ऑर्डरिंग द फूड टू द वेटर. जो आप ऑर्डर करते हो किसको ऑर्डर करते हो? वेटर को ऑर्डर करते हो. बट द वेटर है इनफैक्ट ही इज नॉट प्रिपेयरिंग द फूड. द फूड इज प्रिपेयर्ड बाय द शेफ. ओके, so here the waiter is act as a application software. Then it ordered to the system software, that is the chef who is preparing the food. Then the chef is not a magician कि वो उस मंत्र जुस मंत्र कर दिया और खाना बन गया. He has to use some hardwares, like he has to use some kind of stove, utensils, some ingredient to prepare your food. After the food has been prepared, the cook or the chef give the food to the application software, who is nothing than the waiter. The waiter provide you the food. And likewise, whatever the calculation or process you want to do, we are giving command to the application software. The application software जो है वो उस कमांड को पास कर देता है कहाँ पे? सिस्टम सॉफ्टवेयर में. The system software is using the hardware for processing or calculating purpose. After the calculation, whatever be the result appear from the hardware, that comes to the system software. Again, the system software pass that to the application software. From the application software, we'll get the result or whatever be the output we want. We get the output from the application software. I think this much is clear for how the softwares are working. Now, from this system software, the first kind of software is a operating system. Just before that, let me to tell you what is utility. Okay, so system software, clear, which directly access the hardware of the computer. Application software, which is associated with the user. The user's commands are received by the application software. It is used the system software. System software is used to use the hardware for your processing or calculation. Now, इस तरह की इंसान काम करते करते या फिर मशीन काम करते करते कभी कभी बीमार हो जाता है, या फिर समटाइम इट गेट टायर्ड और समटाइम इट बिकम टायर्ड. So at that time this utility software has been used. This utility software is used to maintain your computer, or it is used for the maintenance purpose of your computer. कंप्यूटर को मेंटेन करने के लिए या फिर कंप्यूटर को सिस्टम को सिस्टमेटिकली काम करने के लिए
ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। दैट मीन्स ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये रेगुलरली यूज होते हैं, बट कभी कभी हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं सो दैट जो कंप्यूटर में जो प्रॉब्लम्स है या फिर जो भी फाइल्स मिसिंग है या फिर किसी भी तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी हैव टू यूज द दिस काइंड ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। द ऑपरेटिंग सिस्टम is the minimum set of instruction that bring the computer into operation mode. That means कंप्यूटर को ऑपरेशन मोड में लाने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉफ्टवेयर चाहिए उसी को ही कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इन द लास्ट क्लास आई टोल्ड यू ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दैट विल बी स्टोर्ड, वो स्टोर होता है कहाँ पे? हार्ड डिस्क में। And the booting is the process that used to load the operating system from the hard disk to the primary memory of the computer. So उसमें आपको मैं ये बताया था कि जब आप कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हो तो पहले क्या होता है, द बूटिंग प्रोसेस अपीयर, जिसमें बहुत सारे टेक्स्ट आते हैं, सेल्फ टेस्ट होता है कंप्यूटर का। आफ्टर दैट द विंडोज या फिर द डेस्कटॉप विल अपीयर ऑन योर स्क्रीन। आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ द डेस्कटॉप, उसके बाद ही आप लोग कोई काम कर सकते हो। दैट विंडो इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज द मिनिमम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और इट इज द मिनिमम सॉफ्टवेयर दैट यूज टू ब्रिंग द कंप्यूटर इनटू ऑपरेशन मोड। Without having an operating system, the computer is like a dummy machine. अब सिंपली एक मशीन को आप रख दो बिना कुछ काम किए, कंप्यूटर उस तरह की हो जाएगा अगर कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ओके, तो दिस इज द व्हाई वी आर यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? द फर्स्ट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोसेसर मैनेजमेंट। सेकेंड इज अ मेमोरी मैनेजमेंट। Third is device management. Fourth is file management. These are the four tasks, or these are the four functions of a operating system. The first one is processor management. Second is memory management. Third, device management. Fourth is the file management. Okay. So first come to the processor management, or the operating system is act as a manager for processor. Processor is nothing than the CPU. The CPU itself known as the processor or microprocessor उसको कहा जाता है। Okay, the speed of processor is very much higher than the memory and the devices. Devices क्या है? What are the external devices we are using in a computer, such as input device, output device, keyboard हो गया, monitor हो गया, printer हो गया, these are known as the devices. Okay, so devices का जो speed है as well as the memory का speed है, these are far slower than your processor speed. So we have to create a coordination between the processor, memory and the devices so that the processor can be maximum utilized, can be done with the प्रोसेसर। और प्रोसेसर जो है ज्यादा से ज्यादा यूज हो सकता है, इसके लिए हमको यूज करना पड़ता है सम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और सम मैनेजमेंट शेड्यूलिंग। दिस आर कॉल्ड मैनेजमेंट शेड्यूलिंग और मैनेजमेंट एल्गोरिथम भी उसको कहा जाता है। इन विच द फर्स्ट वन इज अ प्रोसेसर मैनेजमेंट। इन केस ऑफ प्रोसेसर मैनेजमेंट द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द CPU, how the CPU is provided to different tasks. Now a new term here appear, that is the task. ठीक है, जब आप काम करते हो कंप्यूटर में,
तो आप लोग कई बार क्या करते हो, 2-3 चीजें एक साथ ओपन कर लेते हो। आप इंटरनेट ओपन किए हो, अगर विद दैट इंटरनेट यू आर लिसनिंग सम सॉन्ग, आप कुछ गाना भी सुन रहे हो और आप कुछ चीजें सपोज टाइप कर रहे हो। तो 3 चीजें अब आपके पास है, एक आप गाना सुन रहे हो, एक आप इंटरनेट चला रहे हो और एक आप कुछ चीजें टाइप कर रहे हो। साइमल्टेनियसली इन योर कंप्यूटर कुछ गेम भी ओपन है जिसको आप बीच बीच में खेल रहे हो। तो दीज आर द 4 डिफरेंट टास्क दैट एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू एट द सेम टाइम। एक ही समय पे ये 4 तरह के टास्क आप लोगों का हो रहा है। फर्स्ट इज अ गेम, सेकेंड इज अ इंटरनेट, थर्ड इज अ टाइपिंग वर्क एंड फोर्थ इज अ लिसनिंग अ म्यूजिक। ये 4 काम हो रहा है। तो टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4। जब ये 4 टास्क हो गया है, इन चारों टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए वी नीड द प्रोसेसर और द सीपीयू। ये चारों चीजें तब एफिशिएंटली काम कर सकते हैं when they are using the CPU. Now CPU, there is one CPU but there are 4 tasks. So this kind of problem can be managed by some scheduling algorithm which is known as processor management. Okay, so in case of processor management, the operating system use 2 kind of algorithm या फिर 2 kind of system, 2 तरह के systems वो use करता है। One is the priority scheduling and another is a round robin. First one is your priority scheduling, second one is your round robin. तो first priority scheduling का मतलब ये होता है among this task which is most important task that will be given the time of CPU first. इसमें से जो सबसे important होता है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम पहले CPU को एग्जीक्यूट करने के लिए देता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज यहाँ पे गेम इज अ ऑप्शनल वन, म्यूजिक इज ऑल्सो ऑप्शनल वन। तो आपके पास कंपल्सरी आप क्या कर सकते हो, या फिर आप टाइप कर सकते हो या फिर यू आर यूजिंग इंटरनेट। ओके, सपोज उसमें से उसको ये लगा कि टाइपिंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, देन टाइपिंग टास्क विल बी फर्स्ट गिवन टू द CPU or it is moved to the CPU so that it can be executed. Secondly, we need internet. Second task will be executed as internet by the CPU. The third task, suppose music is the third task, then the fourth task is the game. So this is how in priority scheduling the CPU will managed by the operating system. Now the second thing is a round robin method or round robin scheduling. In this scheduling, what happens? A specific period of time which is known as a time slice. The time slice is given to each task. Now, for example, suppose game, internet, music, and time. These are the 4 tasks. Now, what happened here? First, suppose 2 seconds is the time slice. For example, the first 2 seconds will be given to game, then second 2 seconds will be given to internet, third 2 seconds will be given to music, fourth 2 seconds will be given to your typing task. After that, again the second round appear, second round game, second round internet, second round music, and the second round your typing. Now in between that, if any of the task has been over, suppose आपका गेम ओवर हो जाता है, तो गेम का जो पीरियड है वो पीरियड फिर इन लोगों के लिए डिवाइड हो जाएगा सबके लिए। तो सबके जो टाइम स्लाइस है वो फिर बढ़ जाएगा, सबको अलग अलग टाइम आपको मिल जाएगा। नाउ दिस इज द प्रोसेस इन विच द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द प्रोसेसर आइदर यूजिंग राउंड रॉबिन मेथड और यूजिंग प्रायोरिटी मेथड। So student, this much for today. Thank you and have a nice day.